हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे दैट विल डिस्कस अ कपल ऑफ सुपर इंटरेस्टिंग ईटीएफ्स एंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स। तो आइडिया ऑफ दिस वीडियो क्या है कि अभी बेयर मार्केट चल रही है, अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स एक्टिव इन्वेस्टिंग में इंडिविजुअल स्टॉक्स में थोड़ा सा घबरा जाते हैं। बट ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू क्या होता है कि नेचुरली यू गेट द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड इफ द वैल्यूएशंस आर चीप एंड इफ देयर इज पेसिमिज्म इन द मार्केट सो यू कैन एटलीस्ट लुक टू बेसिकली स्टडी दीस टाइप ऑफ ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स। तो ईटीएफ्स का हमारा सिंपल फ्रेमवर्क है। तो ईटीएफ्स क्या होते हैं बेसिकली? ईटीएफ्स आर डिफरेंट बास्केट्स ऑफ इंडिसेस जो आप एक्सचेंज से ले सकते हैं। एंड एक्चुअली मैं सपोज करते हैं जैसे अगर फार्मा बीस का ईटीएफ है तो इट विल रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग फार्मा इंडेक्स, राइट? तो उसके अंदर सारी जो फार्मा इंडेक्स की कंपनीज हैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से उसके अंदर रेप्लिकेट होंगे। तो ईटीएफ से हमारा बड़ा एक सिंपल फ्रेमवर्क है विच इज़ द थ्री लेगेड फ्रेमवर्क। तो पहला ईटीएफ का फ्रेमवर्क क्या है कि वी लुक एट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज जहाँ पे मल्टी ईयर टेल विंडो। क्या आपको पता है कि उस सेक्टर में सारे बिज़नेसेस अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ईटीएफ का एक केस बनता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट फ्रेमवर्क, दैट इज़ मल्टी ईयर टेलविंड सेक्टर्स। सेकंड ईटीएफ का फ्रेमवर्क क्या बनता है? दैट इज़ रिवर्जन टू मीन कि लाइक द सेक्टर हैज़ फॉलन टू मच बिकॉज़ ऑफ पेसिमिज्म एंड पेसिमिज्म की वजह से कभी ना कभी रिवर्जन टू मीन आएगा, तो दैट इज़ द सेकंड फ्रेमवर्क। थर्ड फ्रेमवर्क है कि टेक्निकली स्ट्रांग है सेक्टर, सेक्टर में वैल्यूएशंस भी ओके है एंड सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। नियर टर्म टैक्टिकल प्ले हो सकता है नेक्स्ट 18 टू 24 मंथ्स का। तो दैट इज ऑल्सो एन ईटीएफ फ्रेमवर्क दैट फिट्स इन। तो हम इस तीन फ्रेमवर्क में ईटीएफ फिट करके देखेंगे एंड इसके साथ साथ हम कपल ऑफ इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करेंगे जहाँ पे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो बॉटम्स अप स्क्रीन है, बिकॉज मैं टॉप डाउन कम स्क्रीन करता हूँ। बॉटम्स अप इन द सेंस कि उन म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे मैं पोर्टफोलियो देख के स्क्रीन करता हूँ, बिकॉज एट द एंड आई ऑल्सो डू स्टॉक पिकिंग। तो आई लुक एट द पोर्टफोलियोज ऑफ दीज म्यूचुअल फंड्स। तो कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स वो कॉमन निकल के आ रहे हैं जिनको मैं बार बार स्क्रीन कर रहा हूँ बॉटम्स अप। तो दैट इज द आइडिया ऑफ दिस। तो इट इज मोर ऑफ अ क्वालिटेटिव filter that I use versus a quantitative filter of looking at mutual funds, right? But before I start, what we have done is that we have recently like read more than 300 to 350 con calls across different industries. एंड जो पर्सिस्टेंस की टीम है तो उन्होंने एक डेक बनाई है, काफ़ी डिटेल्ड है, जिसके अंदर कॉन कॉल्स और कॉन्टेक्स्ट है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ का, जो Q3 की कॉन कॉल्स कंक्लूड हुई थी। एंड इट गिव्स यू अ फ्लेवर अक्रॉस सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज़ कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ में अभी चल क्या रहा है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मस्ट रीड डेक्स इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड अबाउट द इन्वेस्टिंग वर्ल्ड। द लिंक टू रीड दैट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। With this, let's start the video with our first most interesting ETF. तो हम फर्स्ट सच ईटीएफ देखते हैं विच इज अ एरोस्पेस एंड डिफेंस ईटीएफ। सो दिस इज एन ईटीएफ विच इज लिस्टेड इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बाय द नेम ऑफ आर्का इज द टिकर नेम। तो इन्वेस्को का ये ईटीएफ है एंड इस ईटीएफ के ना 63 होल्डिंग्स है। सो व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस वन? तो बहुत ही सिंपल मतलब थॉट प्रोसेस है। तो हमारा जो फर्स्ट फ्रेमवर्क है कि यार मल्टी डेकेडल थीम्स बन जाती है, राइट? So this is an ETF which has compounded in dollar terms at 13.3% over the last 20 years. And it has beaten the S&P 500 by almost 2.2 percentage during that entire phase, right? And इस ETF में ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे बैरियर टू एंट्रीज बहुत ज़्यादा हाई है। एंड टुडे वी आर इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, राइट? तो ट्रम्प हैज़ बीन रिपीटेडली टेलिंग नेटो कि यार 2 to 2.5% of the GDP should be done in defense spending. And like we have seen a lot of skirmishes and wars happening over the last 5 to 6 years, right? So this ETF comes into that and एक्चुअली में अगर हम ये देखते हैं तो इस ईटीएफ में किस-किस टाइप की कंपनीज़ भी है, तो एक बारी हम वो भी डिस्कस करते हैं। एंड पहले टेलविंड्स देखते हैं। तो पहला क्या है कि यार देयर इज़ अ लाइक ग्लोबल सुपर साइकिल व्हिच इज़ हैपनिंग इन एरोस्पेस एंड डिफेंस, राइट? तो अगेन ए&डी जो रेवेन्यूज़ हैं $800 बिलियन से $1.25 ट्रिलियन प्लस हो सकते हैं बाय मिड 2030s। एंड नेटो कंट्रीज़ हैव प्लेज्ड कि 2% ऑफ देयर जीडीपी दे विल बी स्पेंडिंग इन डिफेंस, राइट? तो अगेन इट्स अ लॉन्ग डेटेड साइकिल वेयर द डिफेंस प्रोक्योरमेंट हैज़ जस्ट स्टार्टेड पिकिंग अप। देन यूएस बजट टेलविंड है। तो यूएस डिफेंस बजट हैज़ क्रॉस्ड $1 ट्रिलियन, $1.1 ट्रिलियन का डिफेंस बजट कर दिया। एंड ऑल्सो इसके साथ-साथ क्या है कि लाइक अ लॉट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग इन बेसिकली योर एरोस्पेस एंड ऑल्सो इन अ लॉट ऑफ ड्रोन बिज़नेसेस एंड अ लॉट ऑफ aerospace defense. So that is something that has been happening all over the world. So it's been a mega trend that is taking place. And it's a long dated order book cycle business because it takes years to build a new jet, years to build a new missile platform, years to build a new drone platform.
राइट? सो दैट इज व्हाट द ईटीएफ इज एक्चुअली अ प्ले ऑन। तो ईटीएफ में की प्लेयर्स कौन से हैं? तो लॉकहीड मार्टिन है, राइट? सो इसमें लॉकहीड मार्टिन आपको दिखेगा। तो अगेन जो आपके लाइक फाइटर जेट्स हैं यूएस के अंदर, तो लॉकहीड मार्टिन इज वन ऑफ द मेजर मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दैट। देन आरटीएक्स कॉर्पोरेशन करके कंपनी है जो इंजन एंड सिस्टम्स में, जीई एरोस्पेस है विच इज इन जेट इंजन्स एंड एमआरओ। देयर इज अनदर कंपनी बाय द नेम ऑफ नॉर्थरॉप ग्रूमन कॉर्प। सो अगेन जो B-52 बॉम्बर्स हैं दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी। देन जनरल डायनामिक्स है, लाइक एल हैरिस टेक्नोलॉजीज है, हनीवेल इंटरनेशनल है जो अपना एविएशन बिजनेस को डीमर्ज कर रही है। हाउमेट एरोस्पेस है विच मेक्स दीज क्रिटिकल पार्ट्स फॉर एरोस्पेस। देन एल्बिट सिस्टम करके एक इजरायली कंपनी भी इस ईटीएफ के अंदर है। राइट? सो दिस इज एन ईटीएफ जहाँ पे अगर आप ये बिग कंपनीज देखेंगे तो जैसे लॉकहीड मार्टिन का एग्जांपल लेते हैं, तो अगेन they are into that F-35 program and they have been delivering more than $50 billion worth of revenues alone, that F-35 program, right? So again, it will take a number of years for their entire backlog to finish. And there's another company that is RTX Corporation, which is again commercial aerospace or defense modernization की proxy है। टू इंजन ग्रोथ स्टोरी है बिकॉज प्रैट एंड विटनी के जो आपके इंजन फ्लीट जो है बेसिकली जनरेट्स डेकेड्स ऑफ आफ्टर मार्केट एमआरओ रेवेन्यूज। पहले जो रेथियन एंड मिसाइल्स है जो आरटीएक्स कॉर्पोरेशन है, इट कैप्चर्स एवरी मिसाइल प्रोग्राम फ्रॉम स्टिंगर्स इन यूक्रेन टू पैक-3 इन एशिया, राइट? सो अगेन मिसाइल प्रोग्राम्स के अंदर भी ये कंपनी है। एंड ऑल्सो ऑर्डर बैकलॉग भी काफ़ी इंक्रीज हो गई है। एंड देयर आर 1500 जीटीएफ इंजन्स जो प्रैट एंड विटनी के विच आर एंटरिंग द पीक आफ्टर मार्केट ईयर्स, तो उनके लिए एमआरओ सर्विसेज भी चाहिए। देन बोइंग है, बोइंग के अंदर कॉर्पोरेट टर्न अराउंड चल रहा है। अगर टर्न अराउंड हो गया तो वैल्यूएशन इज चीप, बट अगेन आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट ऑन बोइंग। जी एरोस्पेस इज अ पार्ट ऑफ इट, राइट? सो जी एरोस्पेस जी वेरनोवा से डीमर्ज हुई थी एंड दे आर द लीप इंजन्स जो 737 मैक्स और A320 नियो को पावर करते हैं। फिर नॉर्थरॉप ग्रूमन कॉर्पोरेशन है, अगेन इट इज B-21 जो नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर्स है उसके अंदर इन्वॉल्व है। B-52 बॉम्बर्स, लाइक दिस कंपनी वॉज देयर। And again it is a business which is going to stay for a number of years to come. Similarly, General Dynamics एक और कंपनी यहाँ पे है जो again it is a company which is again into combat systems के अंदर है, marine systems के अंदर है, nuclear submarines के अंदर है, right? So Honeywell International का भी demerger हो रहा है। So all these companies which are into aerospace and defense theme are part of this particular index, right? तो एक बार इस इंडेक्स का मैं आपके साथ ईटीएफ का जो इस ईटीएफ का जो मैं आपके साथ टेक्निकल्स भी शेयर करता हूँ, तो पी रेशियो 34 35 36 टाइम्स पे है। एंड अगर मैं टेक्निकल चार्ट शेयर करता हूँ तो अगेन इट इज़ एन इंडेक्स विच हैज़ बीन इन कंटिन्यूअस स्टेज 2, राइट? तो अगर आप देखेंगे दिस लाइक इट्स लिस्टेड ऑन NYSE एंड इट कीप्स गोइंग इनटू स्टेज 2 फ्रॉम टाइम टू टाइम, गोज थ्रू कंसोलिडेशन, जैसे भी कंसोलिडेशन जोन के थ्रू जा रहे हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट ETF दैट आई एम डिस्कसिंग विच इज इन अ ट्रेंड विच कैन लास्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 years। ये तो हमारा फर्स्ट ETF हो गया। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स आवर सेकंड ETF ऑफ द डे। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, ऑन 28th and 29th March we are doing an AI investing boot camp. So what you will learn in this AI investing boot camp कि AI को यूज करके हाउ वी कैन मल्टीप्लाई आवर प्रोडक्टिविटी। कि हम अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, किसी कंपनी को पढ़ रहे हैं, किसी इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं, या फिर स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक स्टॉक्स हो या इंटरनेशनल बिजनेसेस हो, तो हम एआई को यूज करके इस सारे प्रोसेस को कैसे कट शॉर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी लर्न इन ओवर अ क्लास दैट विल लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 6.5 to 7 hours ओवर द वीकेंड। इसके साथ साथ क्या है कि ऑल दीज कोर्सेज एंड वेबिनार्स दैट वी डू आर पार्ट ऑफ वन SYC मेंबरशिप, जहाँ पे हम आपको ये सिखाते हैं कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, देन हाउ यू कैन फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज, हाउ यू कैन डू टेक्निकल एनालिसिस एंड हाउ यू कैन स्कैन फॉर स्टॉक्स। एंड साथ साथ ये जो AI इन्वेस्टिंग कोर्स है, इट्स एन एडिशनल बोनस विच इज इंक्लूडेड इन द SYC मेंबरशिप। So you can use a one-time coupon code SYCAI10 to register for the SYC membership in the description box below. अब हम सेकंड ETF की तरफ आते हैं। तो सेकंड ETF इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल वन। हम इंडियन ETFs के भी डिस्कशन करेंगे। द सेकंड ETF नेम इज ग्रिड ETF एंड अगेन इट्स लाइक फर्स्ट जस्ट बेसिकली NASDAQ क्लीन एज स्मार्ट ग्रिड करके है। तो इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स फंड विच इज अगेन बेस्ड आउट ऑफ US। तो इसमें ऑलमोस्ट $8 billion का भी AUM है। एक्सपेंस रेशियो 0.58 के आसपास है। पी रेशियो 26 to 27 टाइम्स के बीच में चल रही है। एंड नंबर ऑफ होल्डिंग्स इन दिस पर्टिकुलर ETF आर 122। तो व्हाट इज द थीसिस? तो सिंपल थीसिस है कि यार AI एंड डेटा सेंटर डिमांड जो है इट इज लीडिंग टू एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन इलेक्ट्रिफिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 4 years या 5 years में 4x मोर पावर डिमांड रिक्वायर्ड होगी बाय 2030। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ट्रांजिशन हो रहा है, तो ग्लोबल EV अडॉप्शन इज एक्सेलरेटिंग, राइट? तो ऐसा ग्रिड की मॉडर्नाइजेशन हो रही है। अगर आपने देखा हो तो स्पेन के अंदर लास्ट ईयर देयर वाज अ ग्रिड आउटेज ऑफ ऑलमोस्ट 10 hours, राइट? बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी उन्होंने बहुत लगा दी थी, तो विच लेड टू इंटरमिटेंसी ऑन द ग्रिड। तो वो वोल्टेज को मैनेज नहीं कर पाए। तो वोल्टेज मैनेज करने के लिए एक्चुअली एक प्रोडक्ट आता है सैटकॉम करके।
तो वो भी एक आपको मैं ट्रिविया क्वेश्चन देता हूँ, एक इंडियन कंपनी बनाती है वो प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 5 टू 10 ईयर्स विल बी ह्यूज, बिकॉज़ जैसे-जैसे ग्रिड्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल फोकस, देयर विल बी एन इंटरमिटेंसी, because sometimes in the day there'll be a lot of sun, but sometimes there won't be. Sometimes there'll be a lot of wind, but sometimes there won't be, right? So it leads to a need of countering the intermittency created by your renewable energy. So that is what these are, some of these interesting companies are operating in, राइट? एंड क्लीन एनर्जी की इंटीग्रेशन के लिए भी, लोड बैलेंसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या यू नीड टू हैव अ बेटर एंड अ स्मार्टर ग्रिड नेटवर्क, राइट? So this is what there is, like looking at this particular ETF. So last 5 years say there has been a super cycle, right? So dollar terms mein this ETF has gone to deliver a 17.2% dollar CAGR, right? Last 1 year mein it is up by almost 52-53%. Year to date it is one of the best performing ETFs out there, राइट? सो इस ईटीएफ का अगेन अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, तो दे आर दीज कंपनीज विच आर डूइंग मल्टी ईयर कैपेक्स, जैसे नेशनल ग्रिड पीएलसी होगी, तो यूटिलिटी है यूके में, राइट? सो अगेन एबीबी लिमिटेड होगी विच इज एन इंडस्ट्रियल बेस्ड आउट ऑफ स्विट्जरलैंड, जॉनसन कंट्रोल्स हो गया जो आइलैंड बेस्ड इंडस्ट्रियल है, राइट? स्नाइडर इलेक्ट्रिक हो गया, ईटॉन कॉर्पोरेशन हो गया विच इज अ फंटेस्टिक कंपनी विच इज अगेन एन इंडस्ट्रियल, राइट? देन यूटिलिटीज में जर्मन यूटिलिटी है, राइट? देन क्वांटा सर्विसेज है, अगेन इट्स अ यूएसए बेस्ड इंडस्ट्रियल, प्रिस्बियन करके वन ऑफ द लार्जेस्ट केबल एंड वायर मैन्युफैक्चरर्स इज देयर इन दिस ईटीएफ। तो अगर आप देखेंगे तो टॉप 10 कंपनीज आउट ऑफ 122 कंपनीज आर सम ऑफ द कंपनीज व्हिच बेनिफिट फ्रॉम द इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइक ऑफ द वर्ल्ड, राइट? And it's a theme which is here to stay, because data center, it is expected in US, will end up consuming 4 to 5% of all the electricity generated by 2030. And it is not just here, it is across the world which this theme is playing out right now. So industrials are 61.5% of this particular sectoral ETF, utilities are 18.8, technology companies are 12.9, then the others are there, right? So almost 12, so almost this ETF is has 122 holdings, and these are some of the companies which find their way into this particular ETF, right? So इस ETF का भी हम लोग एक वो भी ले लेते हैं, like just let me look at the technicals of this particular ETF. Hopefully you're learning something new, because this ETF investing is also a way to go about things, right? So again, it's an ETF which has constantly been in stage 2, right? So because a lot of these companies grow regardless of market environment, but अब तो एक capex की super cycle भी आ चुकी है for electrification in the world, and this is why this ETF like goes to a stage 2 trend, then consolidates, downward trajectory होती है, फिर it goes to a stage 2 trend, जैसे अभी stage 2 trend में चल रहा है। अगर ये consolidation के through जाता है तो it's an ETF which could present the next 3 to 5 year opportunity from it. So this is also an interesting ETF that exists in the world. So hopefully you're learning something new कि different ETFs की investing कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ इंडियन ETFs की तरफ चलते हैं, जहाँ पे पेसिमिज्म बहुत हो गया या फियर बहुत हो गया, या फिर वो ETFs एट बिलो बुक वैल्यू पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। एंड दिस इज एन ETF विच इज अगेन निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडेक्स है, राइट? सो अगेन वैसे तो PSU बैंक इंडेक्स हैज बीन डूइंग मच बेटर, इट इज इन मोमेंटम, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर हम इंडेक्स देखते हैं तो इट हैज फॉलन टू 1.99 टाइम्स प्राइस टू बुक, विच इज वन ऑफ द चीपेस्ट इट हैज एवर बीन ओवर द लास्ट 10 years. एक्चुअली तो निफ्टी आईटी भी मीडियन पी के बिलो चली गई है, बट वहाँ पे टर्मिनल वैल्यू रिस्क है तो कहना मुश्किल है। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक ETF अगेन फर्स्ट इफ सम रिवर्जन टू मीन हैपेंस एंड इट गोज बैक टू 2.4 टाइम्स मीडियन प्राइस टू बुक, there could be decent upside over here, right? Because asset quality is still pristine, and after 1-2 years a lot of these private sector banks should also start growing again, right? So private sector bank Bs में again Nippon India ETF bank Bs करके एक option आता है, तो again low exchange like low cost exchange traded fund है, but opposite of a good idea can also be a good idea. तो again एक और जो ETF है which has been doing really well is the Nifty PSU bank Bs, right? So PSU bank Bs भी आती है, it has constantly been in a stage 2, right? And अभी consolidation के through जा रहा है, right? So both private sector bank Bs and PSU bank Bs represent a different type of investing framework right now. Private sector bank Bs represents a framework where the valuations are cheap and reversion to mean can happen, where the price to book can go from 1.99, 1.97 times to 2.3, 2.4 times again. Whereas PSU bank Bs is like ki what is in momentum should stay in momentum or continue in momentum, because PSU banks has been one of the leading sectors of this particular bull market. This last 5 years, it is one of the leading sectors, right? So these are two interesting ETFs. वैसे तो फार्मा बीज भी इंटरेस्टिंग ETF है, बट फार्मा में मेरे को ऐसा लगता है कि बॉटम्स अप स्टोरी बेटर है कंपनीज की, क्योंकि CDMO वाली कंपनीज में ज़्यादा ग्रोथ है। अभी सेमाग्लूडाइड के चक्कर में निफ्टी फार्मा कंपनीज में भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। और अगर हम ETFs देखें और कौन कौन से इंडिसेस आते हैं, right? So again, this is
समथिंग विच कैन रियली हेल्प यू ऑल्सो। सो इट्स जस्ट ओवर हियर। तो हम इंडेक्स में आते हैं एंड देखते हैं कि कौन कौन से indices have started doing well. तो power is an index which has started gaining strength. Nifty Pharma is also another index which has just started gaining strength, right? So these two are some of the indices जहाँ पे strength इस time पे बढ़ रही है, right? तो पावर इंडेक्स में पोस्ट ऑल दीज क्रूड ऑयल डिस्ट्रप्शन के बाद से स्ट्रेंथ बढ़नी स्टार्ट हुई है। तो इंडिपेंडेंटली आप ये इंडेक्स भी देख सकते हैं। स्टॉक स्कैन्स में, मार्केट स्कैन्स के फीचर में आप डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं, स्कोर चेंज देख सकते हैं जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ रही है, राइट? सो कोई अगर अंडर परफॉर्म भी कर रहा है, इफ इट स्टार्ट्स गोइंग इनटू रिलेटिव स्ट्रेंथ, दैट लुक्स इंटरेस्टिंग। जैसे निफ्टी फार्मा का अगर आप अभी ईटीएफ देखे, निफ्टी फार्मा देखते हैं आप, तो फार्मा बीज भी वैसे आता है। Let me just open Nifty Pharma. The Nifty Pharma has also gone through a long consolidation. Like, so it's almost a 18-19 month consolidation and relative strength has just started going up. So this is also an ETF which one can look at independently if they're doing ETFs. अब मैं आता हूँ, वैसे तो हमने निफ्टी 50 की बहुत बारी बात कर ली है, बट एक बार निफ्टी 50 का भी डिस्कशन कर लेता हूँ कि निफ्टी 50 में सपोर्ट लेवल्स कहाँ हो सकते हैं। तो आई थिंक दीज आर द लेवल्स वेयर दैट इज एट 22,300 और 22,500 के बीच में, राइट? दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, राइट? एंड यहाँ पे आई थिंक निफ्टी 50 की जो पी रेशियो है वो 18 to 18.5 टाइम्स में आ जाएगी। जस्ट लुक्स लाइक द वे द इंडेक्स हैज़ बीन फॉलिंग, इट हैज़ बीन अ फ्री फॉल, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। तो यहाँ इस सपोर्ट लेवल से कोई बाउंस आता है तो अगेन एक कहते हैं ना कि बाय द फियर स्ट्रैटेजी, तो निफ्टी 20 में समवन कुड अडॉप्ट, राइट? अगेन बट अभी हायर हाइज नहीं बन रहे, अभी हम साइडवेज मार्केट में चले गए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हायर हाइज थे, राइट? अभी हम एक साइडवेज मार्केट में हैं। अभी आई थिंक लोअर हाइज बन रहे हैं, तो हम चॉपीनेस के अंदर है, राइट? वी हैव नॉट बीन एबल टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर हाई कॉम्प्रिहेंसिवली, राइट? तो ये एक तरीके के रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, राइट? दीज लेवल्स जो सितंबर 24 में बने थे 26,230। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट है। अज्यूम समवन बॉट राइट एट द पीक ऑफ 2018 ऑफ अगस्त एंड फॉरगॉट अबाउट द मार्केट्स फॉर नेक्स्ट 4 years. That is 11,700 Nifty, right? So just check the 11th October 2021, right after 3 years, the Nifty went to 18,460, and had he had a time horizon of 5 years, right? तो 5 years में देखेंगे तो Nifty almost doubled from those levels, right? So again निफ्टी 50 की वैल्यूएशंस ओवरऑल चीप होने लगी हैं, और एक इंडेक्स जिसकी ओवरऑल वैल्यूएशंस काफ़ी चीप हो रही है, दैट इज निफ्टी 500 एट द मोमेंट। So it's gone to 21.64 times earnings, right? So again, P ratio has fallen, is by labor code का भी impact था, तो it is below the median levels. Median level 25 times का है, अभी 21.6 times आ गया। इन साथ साथ अगर प्राइस टू बुक भी देखते हैं तो प्राइस टू बुक भी लाइक अभी लाइक इट हैज स्टार्टेड कमिंग बिलो द मीडियन लेवल्स, राइट? तो 3.3 के आसपास आ गया। आई थिंक अगर प्राइस टू बुक और 5-10% करेक्ट करता है तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। बट यहाँ पे मैं आपको, एक तो नॉर्मल निफ्टी बीज है, निफ्टी 50 बीज है, ये सब तो ठीक है, राइट? विच इज़ हमने SOIC में सीखा हुआ निफ्टी रैंकिंग मीटर। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज ऑन निफ्टी 500 मोमेंटम 50, राइट? So this is Nifty 500 Momentum 50 Index, which aims to track the performance of top 50 companies within Nifty 500 selected based on the normalized momentum score, right? जैसे हमने स्कोर करा हुआ है स्टॉक स्कैन्स के अंदर, तो इसमें क्या है कि जो टॉप 50 मोमेंटम स्टॉक्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे। पर दिस इज एन ETF विच विल रियली वर्क द मोमेंट योर इंडेक्स टर्न्स। तो ये आप आराम से समझना, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी, राइट? तो अगर हम निफ्टी 500 देखते हैं, राइट, तो निफ्टी 500 का आज जो इंडेक्स है, राइट, तो लेट मी जस्ट शो इट टू यू ऑन चार्ट्स, राइट? तो निफ्टी 500 का जो आज इंडेक्स है, इट हैज बीन चॉपी, right? It has not comprehensively broken highs and not given any trend direction at the moment, right? So similar to the Nifty 50, यहाँ पे these are the very important support levels for this, right? So again, this is a support level of almost 20,000 के आसपास का, जो आज इंडेक्स अपना 21,300 पे चल रहा है। So I think this could be the absolute bottom support levels, right? अगर यहाँ से बाउंस करके इंडेक्स रिवर्ट्स और द ट्रेंड चेंजेस, इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग हायर हाइज, right? So rather than looking at Nifty 50Bs or Nifty 500 ETFs, so one of the very interesting ETFs is that of Nifty 500 Momentum 50. Again, another one is Nifty Momentum 200 करके ETF फंड है, Nifty Momentum 200 ETF। तो यहाँ पे मैं आपको बस दिखाना चाहूँगा कि जब भी ट्रेंड चेंज होता है, राइट, जस्ट टुवर्ड्स द ETF एंड हाउ द स्कोरिंग हैपेंस। अगर आप 20 यहाँ पे देखते हैं, जून 2022 से देखते हैं, so actually में the ETF went up by almost 125% within a span of 2 years, right? पर अगर आप यहाँ पे निफ्टी 50 देखते हैं 2022 जून से, तो निफ्टी 50 was at 16,746, right? I think these levels of almost 15,859, and in the next 2 years हमने यहाँ पे कंपैरिजन करा था टिल दिया गया सितंबर 2024 तक, राइट? तो
विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो इट वेंट फ्रॉम हियर टू ऑलमोस्ट level of this, which is like so almost a gain of 60% on the price level. Whereas the momentum ETF actually went up by, अगर आप चेक करते हैं तो momentum ETF went up by 125%. तो what goes up fast also comes down fast. तो momentum ETF में correction भी 25% की है. Whereas Nifty 50 में जो correction है it is not as ferocious. Nifty 50 की 26,000 has come down to 23,000. तो almost 13-14% का peak से correction है. बट मोमेंटम ETF तब चलेगा अगर इफ द ट्रेंड रिवर्सेस. तो जस्ट कीप दिस ETF इन माइंड बिकॉज द रिटर्न्स बिकम वेरी माइंड बॉगलिंग इफ यू आर एबल टू टाइम इट राइट. बट टू टाइम इट राइट यू नीड टू कीप ट्रैकिंग द सिंपल टेक्निकल्स. वीकली चार्ट पे आके यू कैन सिंपली ट्रैक कि when basically the trend changes or higher highs start forming on the index level. But these are the levels where I think PE ratio will be absolutely dirt cheap. And this is a very strong support level, right? So it's one of the ETFs that you can try again. अब हम चलते हैं towards some of the interesting mutual funds that I've been studying. तो I'll just discuss 2 mutual funds with you which look interesting. हमने एक वीडियो भी बनाई थी, आप वो वीडियो पहले भी देख सकते हैं, राइट. सो लेट्स गो टुवर्ड्स द म्यूचुअल फंड्स नाउ, बट होपफुली यू अंडरस्टूड द ETF स्ट्रैटेजी. म्यूचुअल फंड्स देखते हैं. तो अगेन दीज आर सम ऑफ द इमर्जिंग म्यूचुअल फंड्स. इनमें ज़्यादा भी हो सकता है. तो अगेन जस्ट स्टडी देम इंडिपेंडेंटली. तो जैसे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड है तो स्मॉल कैप स्कीम है. आई थिंक दे हैव डन रिलेटिवली वेल वर्सेस द इंडेक्स बिकॉज सी प्रॉब्लम क्या है कि सितंबर 2024 से अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखते हैं तो इट इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 16 to 17%, राइट. लास्ट 1 ईयर से देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज इज बेयरली अ 0.72%, राइट. तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फंड बिकॉज नॉट बिकॉज की परफॉर्मेंस तो सब ठीक है, बस मेन है कि यार उनके पोर्टफोलियो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना हुआ है बिकॉज इट हैज़ a lot of like high growth businesses in there. So जैसे करूर वाइशा बैंक है just doing 17% ROE almost. राइट. अक्यूटास केमिकल्स है, सिटी यूनियन बैंक है, फेडरल बैंक है, नवीन फ्लोरिन, MCX है, TD पावर है, SGS इंटरप्राइजेज है, लॉरस लैब्स है, किर्लोस्कर ऑयल एक्सचेंजेस है, लेंसकार्ट आई डोंट नो द वैल्यूएशंस, एमटार बियॉन्ड अ पॉइंट टफ टू टेल द वैल्यूएशंस बट अगेन डेटा सेंटर में काफ़ी अच्छी स्टोरी है. लूमैक्स ऑटो है, जी वर्नोवा है. Right, so a lot of these fast growing businesses are there, right? So it's an emerging mutual fund, right? And it's a mutual fund जहाँ पे it's a mutual fund where Utpal Sheth is also like one of the folks who's involved in this. So again, Rare Enterprises के again he is there. And so again thought process जो mega trend investing है वो काफ़ी clearly portfolio में भी दिखता है. So it's an interesting one. One can look at it. Another interesting mutual fund which looks interesting is this Invesco Mid Cap Fund, right? So they've done really well over the last 5 years. Now AUM is also at 10,772 crores. But beyond that, I think some of the portfolio positions are interesting because they do a lot of like they have taken some of the interesting businesses like AU Small Finance Bank, Federal Bank, right? So they got these mid cap banks, right? Like Fed Bank, AU Bank. And BSE Limited has been growing and gaining market share from NSE. Max Financial Services is growing and gaining market share. L&T Finance has done well as a corporate backed NBFC. Right, and Glenmark Pharma has been doing well, right? Because इन्होंने इक्नियोस को टर्न अराउंड कर दिया एंड इनको लाइसेंसिंग रेवेन्यू भी मिल सकता है, राइट. साई लाइफ साइंसेज इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. तो अगेन bottoms up they have made a good decent portfolio which has 43 stocks and 10 stocks are almost 50% of the PF, right. So it also shows signs of stock picking, right. So like trust mutual fund is relatively new but यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि bottoms up अगर हम चेक करते हैं तो they have a lot more stocks, राइट. बिकॉज स्मॉल कैप में काफ़ी बारी लिक्विडिटी नहीं होती. तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स देखेंगे 73 के आसपास है. तो यहाँ पे इन्वेस्को मिड कैप फंड भी बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑफ लेसर नंबर ऑफ स्टॉक्स, राइट. सो दीज आर 2 इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स अलॉन्ग विद द वीडियो दैट वी डिड इन म्यूचुअल फंड्स जिसमें हमने पैसिव फंड्स भी कवर करें. एंड टुडे वी हैव आल्सो कवर्ड अ लॉट ऑफ दीज ETFs. Hopefully you find a lot of learnings from this video and you apply them well in your investing journey, right? So do let me know in the comment section below आपकी क्या की learnings थी. अब हम चलते हैं towards the conclusion of this segment. So in conclusion of this video हम लोग ये देख सकते हैं हमने interesting ETFs डिस्कस करे. Something like Grid ETF हमने एक डिस्कस करा. Then हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी 1-2 इंटरेस्टिंग ETFs डिस्कस करे. तो दीज आर द इंटरेस्टिंग ETFs दैट वी डिस्कस और हमने अपने फ्रेमवर्क लगा के देखा. फिर हमने इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड डिस्कस करे. समथिंग लाइक अ ट्रस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डिस्कस करा. इन्वेस्को मिड कैप म्यूचुअल फंड डिस्कस करा, right. Because size is also the enemy of returns when it comes to mutual funds. So again we have to keep filtering for mutual funds also. and साथ साथ म्यूचुअल फंड्स की हमने एक वीडियो भी बनाई थी इस चैनल पे पहले जो आप देख सकते हैं. सो होपफुली आपको इस वीडियो से की लर्निंग्स मिली हो कि आप ETFs और म्यूचुअल फंड्स खुद कैसे देख सकते हैं. एंड होपफुली दिस वीडियो एड्स वैल्यू टू योर इन्वेस्टिंग जर्नी. If you love this video, do subscribe to the channel and make sure that you smash the thumbs up button. And with this, I'll see you on the next Sunday. Jai Hind.